See, subject name is ITSL, that is IT Service Management. Okay, IT Service Management. This subject marks is 100 only. Okay, practical is not there in this subject. 100 mark subject it is. IT Service Management. Okay. So we have seen the yesterday we have seen the definition of ITSM. Okay. What is ITSM? Can you define, Kirti? Nashira, what is ITSM? Can you define it? वर्ड वाला किया और एक ही सेंटर में सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है वो भी बोला था मैंने आप लोग को करना है क्योंकि यू नो दैट कि हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल What is ITSM? राइट और आपको खाली क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली Can you hear me? yes or no so you will give the properly and you will get the outcome अब आ रही है आवाज? okay so I am not repeating it again yes What is ITSM? Define it. This ITSM stands for Information Technology Service Management. you can see the question one we had already done कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ड्रॉ करना है मैंने कल आपको प्रोग्राम बताया था एंड प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है प्रैक्टिकल नंबर 2 का 1 हमने ऑब्जर्व कर चुके हैं और 2 आपको करना है if you want to draw a word what is it why is it you use a rectangle or you use a square or you use a line See, in this subject, we are going to cover how to deliver good quality product to the customer. Okay, how to get good quality service to customer. The focus is on customer needs and IT services for customers rather than on IT system. In this subject, we are going to focus on इसमें focus रहेगा customer needs and IT services पे, ठीक है, for customers rather than on IT system. System पे हमारा focus ज़्यादा नहीं होगा, IT system पर means focus is not on the technology part, but focus कहाँ पे होना चाहिए इसमें, how to give a good quality product to the customer, how to give quality service to the customer. So our focus is on the customer service only, ठीक है, ITSM में. The main idea behind ITSM is the delivery of IT as a service. Means ITSM में हमको ये देखना है कि how to deliver the service, how to deliver the service, IT service. So how to deliver the IT service. To see, to deliver the service, IT service to the customer, some processes are required, right? कुछ processes का requirement होगा, कुछ tools का requirement होगा, right? Tools use होंगे, कुछ processes use होंगे, कुछ technologies we are going to use to deliver the service to the customer. Okay. Then we have started which topic? ITIL. Okay. What is ITIL? See, ITIL. Can you tell the full form of ITIL? What does it stand for? ITIL? IT Infrastructure Library. IT Infrastructure Library. See here, IT Infrastructure Library. Here, okay. So IT Infrastructure Library, it is framework. Okay. In this framework, source of good practice in service management. Good practices are written in this framework, ITIL. Okay. So this framework, ITIL framework, is used by all the organizations worldwide. It is used. Okay. Worldwide, ITIL is used because it is a framework that defines the good practices in service management. Okay, and it is certified also. Certified means ISO or IEC certified. Okay, these good practices are certified ISO or IEC. Okay, so the organization which are using this ITIL framework, okay, they are
doing the certification work and auditing work. Okay, what they are doing? Auditing and certification. Okay, organizations which are using this framework, ITL framework, their services are certified and audited. Okay, so suppose we are using this framework, ITIL framework, that means we are what our agenda is. क्या aim है हमारा? Deliver the good product to the customer, right? So ITIL library एक library है. Library means collection of, यहाँ पे क्या है? Collection of good practices है. Collection of good practices. Okay. What type of good practices? In service management. सर्विस मैनेज करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस जो है that is maintained in the ITIL library. So see two components में best practices, ठीक है, best practices plus guidance. What is included in ITIL library? Best practices plus guidance. Guidance means different industry guidance, organization, different types of organization guidance, different operating models, and technology architectures. Okay, so different technology knowledge, different organizations, different models. Okay, all type of industry related knowledge are defined in this library ITIL. तो कौन से है इसमें? बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस. अलग से कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस है. कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस इंक्लूड्स guidance related to the industry sectors, organization types, operating models, and technology architectures. Okay. Now see, this is very much important, very important. Service strategy, 5 stages of ITI library. There are 5 stages. Okay. So first is service strategy, then service design, then service transition, service operation, a continuous service improvement, CSI. These are the 5 stages of ITIL library. Okay, in order you have to remember, first service strategy is, so you can't write in second step. In order में लिखना है. Okay, service strategy, then service design, service transition, service operation, and CSI. Okay, so ITIL library includes 5 stages. These are the 5 stages of ITIL library. Or you can say ITIL library 5 stages of service life cycle. Both are same. ITIL library 5 stages, okay, and service life cycle. These 5 steps are included in the service life cycle also. Both are same only. Okay. Now see, there are 5 units. Service strategy. Unit number 1 is based on service strategy concept. Unit number 2 is based on service design. Unit 3 is based on service transition. Unit 4 concept based on service operation. And Unit 5 concept based on CSI. So means in this subject, we are going to cover whole service life cycle. Service life cycle or ITIL library. Okay, so unit number 1 में we will see how to make strategy for the service. Unit 2 पूरा design पे based रहेगा. Unit 3 में transition means changes, updation, modification, deletion. Okay, and Unit 4 में operation means how to implement it. And Unit 5 में focus है हमारा CSI पे. Means after delivering the service to the customer, okay, how you are going to give the warranty or guarantee, ये सब after sale service. Okay, after sale service, that is continuous service improvement, that is in unit number 5. Okay, see, ITIL core library includes 5 stages, right? Figure is indicating this. Strategy, then where is strategy? Service strategy है. Okay, service strategy, design, third step transition,
Fourth phase, service operation, and fifth phase, CSI, continual service improvement. Okay, or you can say ITL core library or service life cycle. What are the five phases of service life cycle? Write in chat box. 5 phases of service life cycle, or you can say ITIL core library. Okay, phases of ITIL library or phases of service life cycle. Write in the chat box. In order, write it in order. Huh? अगर आप किया सर्दी का जो रेडिएशन पूरा कम कर देंगे तो आपको क्रिएटिव लिखो राइट ओके तो सेम वे में आपको रेक्टेंगल की ब्लॉक करना है तो रेक्टेंगल ब्लॉक करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि चीजें ओवरलैप नहीं होना चाहिए ओवरलैप करेगा Waiting for the reply. Huh? Everyone write in the chat box. All 5 of you. रेक्टेंगल में भी ये रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर Yes, right, Kirti. Service strategy, service design, service transition, service operation, and continuous service improvement. Okay, these are the 5 phases of service life cycle or ITIL library. Okay. See, now let's see what is service strategy. Okay, first phase of service life cycle. This is the first phase of service life cycle. The service strategy means, see, your aim is you want to deliver service to the customer. क्या करना है तुमको? Deliver service to the customer. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डायरेक्टली तुम डिलीवर तो नहीं करोगे, राइट? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू विल मेक स्ट्रेटेजी. फर्स्ट स्टेप क्या? यू विल मेक स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी मीन्स प्लान. ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर दी सर्विस. सर्विस स्ट्रेटेजी में दिस इज द फर्स्ट फेज. हाँ, सर्विस स्ट्रेटेजी में इट इंक्लूड्स डिजाइन, हाउ टू डिजाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सर्विस मैनेजमेंट. कहाँ पे सर्विस स्ट्रेटेजी में व्हाट वी विल डू? Okay, we will see how we can design the product, how we can develop and implementation. कैसे करने वाले? ठीक है, प्लानिंग है सर्विस स्ट्रेटेजी में. ओके, सर्विस स्ट्रेटेजी includes how to design, develop and implement the service. Okay. ठीक है हाँ अगर आप प्रिंट आउट लेते हो दैट इज आल्सो बट इट्स नॉट मैथ इट इज क्लियर एवरीवन शुड हैव देयर ओन मैथ होगा तो मुझे पता चलेगा कैसे मैथ होगा अब बोलेंगे मैम. Now see, let's consider organizations. Your organizations, they are setting some objectives. Okay, organization, they are setting some objectives and expectations of performance towards serving customer. See, aim ये है मेरा, I want to deliver service to the customer. First step क्या रहेगा? Service strategy. Service strategy में planning, how to design the product, how to develop and how to implement it. Okay. Then after making the strategy for design, development, implementation, okay, what we will set the objective. We will set the objectives. Okay, objective क्या है मेरा? Objective है I want to earn lot of money. This is the objective. क्या objective set किया मैंने? I want to earn lot of money. Okay. Then my expectation is, expectation क्या है? Customer should be customer should be happy. Okay, ये मेरा second objective है. तो सर्विस स्ट्रेटेजी में योर फोकस शुड बी ऑन डिजाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट. ठीक है, हाउ टू डू इट. एंड सेकंड फोकस होगा यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफॉर्मेंस टुवर्ड्स सर्विंग कस्टमर्स. मींस यू आर सर्विंग द सर्विस टू द कस्टमर, राइट? यू आर सर्विंग. तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर वो कस्टमर्स
को सर्विस प्रोवाइड करो. What are the expectations? They want to earn profit, right? So according to the customers expectations, they're keeping their objectives. Okay. So in service strategy is about ensuring that organizations are in a position to handle the cost and risk associated with their service portfolios. See, service strategy phase में organizations जो है, they are setting their budget. Okay, that means according to the budget only they are designing the product. So they should set the budget. Okay, what is the cost to handle the service and what are the risks associated. Suppose I want to implement this type of service. Okay, I want to manufacture mobile. What are the risks associated? Okay, the risk and cost, both the things they have to handle in this phase, service strategy. Okay, the service strategy is about ensuring that organizations are in a position to handle the cost and risk associated with their service portfolio. Portfolio means उनका service का जो structure है. Okay, that is service portfolios. Now your project is in which phase? हमारा project कौन से phase में? Select from its life cycle, service life cycle. Currently you are at which phase? कौन से phase पे हो for your project? Sem 6 project. Strategy, design, transition, operation or CSI? मैम डिजाइनिंग. Design phase पे हो? हाँ. स्ट्रेटेजी पे कोई नहीं होगा बिकॉज स्ट्रेटेजी फेज यू हैव कंप्लीटेड इन सेमेस्टर 5. ठीक है, टेक्नोलॉजी डिसाइड फ्रंट एंड बैक एंड. ठीक है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गया. देन फीचर्स और सर्विसेज आर यू गोइंग टू इंक्लूड. ये सब क्या है? स्टेप्स ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी, राइट? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ये सब क्या है सर्विस स्ट्रेटेजी में? व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड इन योर प्रोजेक्ट? ये सब क्या है सर्विस स्ट्रेटेजी में? ओके. सी डिजाइन फेज में, डिजाइन मीन्स ब्लूप्रिंट. ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ द सर्विस लाइक आर्किटेक्चर. ओके, डिजाइन में क्या करना है? whatever you have decided in service strategy phase, ठीक है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करोगे, मॉडल रेडी करना. लाइक you have decided which model you are using, waterfall model. ठीक है, और रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल. डिजाइनिंग फेज में आएगा तुम्हारे. डिजाइनिंग फेज में what we are going to see, it is a type of blueprint. ठीक है, blueprint of the service. Now see, in service design, ठीक है, design and development of services, service management processes. Design for the service and development of service. Okay, design of the service means modules के features. Okay, different modules के features होंगे. how you are going to link up with the database, ये सब आएगा डिजाइन में. डिजाइन के आर्किटेक्चर में. It covers design principles and methods for converting strategic objectives. See, the scope of service design. The scope of service design is not limited to new service. That means after designing the service also you can do the changes. Okay, modification is possible in service design. Okay, modification you can do. Service design is not limited to the new services. Okay, you can modify it also. If the technology changes, you can modify it. Okay, or if there is a
risk or there is error in the service, you can modify the design, service design. Okay, so it includes the changes and improvement necessary to increase the value of the customer. Increase the value of the customer means quality service, providing quality service to the customer. Value here, value means quality. Giving value to customer means how you are going to give value to customer. Customer को value means कैसे देना है? By providing good quality service. By providing good quality service. Okay. The service design is not limited to new service. That means changes and improvement can be done. Okay. If you want to maintain good quality service, you can anytime you can change the design of the service. Now see service transition. Okay. See, service transition means development and improvement of capabilities for transitioning new and change services into operation. Transitioning of new and change service means implementation. Here you have to start the implementation of new service or change service. Change service means you have done the modification. That is change service. So service transition with development work is started here. With development work. The development of new and change service. Okay. Then from service transition to after developing it and after implementing it, service transition to service operation. कहाँ पे जाएगा वो service transition to service operation. Okay. So in service transition, see, in service transition, requirements of service strategy. See, first let us understand this. Service strategy require how the requirements of service strategy encoded in service design. सर्विस स्ट्रेटेजी जो है वो कहाँ पे एनकोड किया गया सर्विस डिजाइन में, राइट? क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, दिस इज सेकंड फेज. तो सर्विस स्ट्रेटेजी, requirements of service strategy encoded in service design. ठीक है? Then after making the design, we are implementing it कहाँ पे? In service transition. Okay. Service transition में development है, development work, that is implementation. Okay. Then service operation में main service operation का ये role है how to control the risk. Okay, risk or any risk of failure or disruption. Okay, so controlling the risk of failure and disruption ये कहाँ पे हो रहा है? सर्विस ऑपरेशन में. सर्विस ऑपरेशन में. ओके. एंड सर्विस ट्रांजिशन में डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज. डेवलपमेंट, डेवलप भी करना और इंप्रूव भी करना, दोनों भी हो सकता है इसमें. डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज फॉर ट्रांजिशनिंग न्यू एंड चेंज सर्विसेज इनटू ऑपरेशन. ट्रांजिशन करना है, डेवलपमेंट करने के बाद यू हैव टू कहाँ पे? ट्रांसिट इनटू नेक्स्ट फेज. कौन सा है वो? सर्विस ऑपरेशन. We now give one example of service transition. Can you give example of service transition? Example of service transition. To take example of Zoom only.
सर्विस ट्रांजिशन में जूम का अभी लेटेस्ट वर्जन आई डोंट नो क्या 5 पॉइंट कुछ है, पर स्टार्टिंग में उसका वर्जन पहले कम था, राइट? 5.1 लेट अस कंसीडर, अभी वो 5.5 पे आ गया। देयर आर चेंजेस, राइट? न्यू में जब न्यू था 5.1 था, लेट अस कंसीडर चेंज हो गए, नाउ इट इज 5.5। तो देयर आर चेंजेस ना इन 5.1 एंड 5.5 के ड्यूरेशन में, देयर आर सम चेंजेस इन जूम, राइट? दिस इज दिस मतलब यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ different applications also, like technology example, ठीक है? एंड्रॉइड, ठीक है? एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन्स आर देयर, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स आर अवेलेबल। so why they are changing the version number, ठीक है? whenever they are changing the version number like 4.1 से 4.2 means some type of improvement is done। क्या किया हुआ उसमें? इम्प्रूवमेंट किया हुआ, कुछ फीचर्स ऐड हुए या तो कुछ एरर्स को सॉल्व किया गया, ओके? तो सर्विस ट्रांजिशन में डेवलपमेंट वर्क, आइदर यू कैन डेवलप द न्यू प्रोडक्ट और यू कैन डू द इम्प्रूवमेंट। क्या कर सकते हैं हम लोग? इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यू कैन डू द इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, okay? If there are bugs or errors, or there is a changes in the version number, okay, or there is a changes in the technology, so you can do in this space service transition, okay? Exactly. The size is same, right? But because the distance is increased, so you can see the difference. Okay? So simply increase the resolution will not remove the artifact. So increase the resolution will only move the artifact closer to the point. है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल केजी टू पीजी, क्या है ये? एग्जाम्पल ऑफ सर्विस ट्रांजिशन ओनली है। पहले तुम फर्स्ट क्लास का है तुम्हारा केजी, ठीक है? नर्सरी से लेके पूरा पीजी तक, तो क्या हुआ? देयर आर सम चेंजेस, राइट? वो सेम सर्विस ट्रांजिशन है। एक सर्विस में सर्विस गोज इन डिफरेंट फेजेस, ठीक है? डिफरेंट ट्रांजिशन फेजेस। सर्विस जो है वो डिफरेंट ट्रांजिशन फेज पे जाता है। लाइक फोन के डिफरेंट वर्जन है, ठीक है? डिफरेंट मॉडल्स है फोन के, तो वो सब क्या है? अभी एक लेटेस्ट कंसीडर एमआई का ही फोन ले लो, ठीक है? उसमें डिफरेंट प्रो होगा, ठीक है? एक 10.1 वर्जन है, अदर फोन इज 11.1 वर्जन। तो क्या है वो सब? देयर इम्प्रूवमेंट इन द सेम मॉडल ओनली ना। एमआई में ही क्या कर रहे? दे आर डूइंग द इम्प्रूवमेंट, दे आर डूइंग द चेंजेस, ओके? तो सर्विस ट्रांजिशन में क्या याद रखना है? डेवलपमेंट कैन बी डन, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ओके? In this process, there is layer To see the definition now, service transition volume provides guidance for the development and improvement of capabilities for transitioning. Transitioning means एक फेज से दूसरे फेज पे जाना, ओके? For transitioning new and changed service into operation. जो न्यू और चेंज सर्विस में तुमने जो डेवलपमेंट किए हो, कहाँ पे तुम भेज रहे हो? ऑपरेशन फेज में, pre-sampling method ओके? or pure sampling method. So what we have covered today, Major theories of ITL library, okay, और सर्विस लाइफ साइकिल के there are 5 phases: strategy, design, transition, operation, CSI. तो यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप Is it clear? Yes, ma'am. Operation CSI we'll see in the next lecture. Operation CSI. Operation CSI. CSI stands for Continuous Service Improvement. Ma'am, your notes. Notes I will share. Okay, ma'am.